you can just respond on the chat box, and yeah, feel free to ask anything, and maybe if not in between, I can answer those questions after, and whenever I feel like, if I get in time in between, I will answer your questions. So moving ahead, how am I? I'm Sagar, and I'm feeling very excited to join this session because this is the first time I'm interacting with the kids, जहाँ मैं बच्चों के साथ interact कर रहा हूँ, जहाँ उनको बता रहा हूँ कि क्या how is my journey. So moving ahead, what how like मैं क्या कर रहा हूँ अभी, what am I doing? So I'm Sagar and I'm working for Turing.com. Turing.com is a kind of freelancing where it's not प्रॉपर, आप कंपनी में जब से काम करते हो ना, तो आपको हमेशा मतलब कंपनी की तरफ से पेरोल मिलता है, पैसे मिलते हैं, बट आई एम नॉट वर्किंग लाइक दैट. सो मेरा क्या है, थोड़ा जैसे जैसे आप डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वहां पे आप जाते हो, वहां पैसे देते हो, एंड देन you get the treatment. The doctor is not working as an employee to any hospital, उसका खुद का क्लिनिक है. तो वैसे ही मेरा भी काम है, but I work on a freelancing portal which is like turing.com, and my hobbies are rapping and teaching. मुझे I am very much interested in teaching kids. मैंने इसके पहले भी बहुत पहले, I would say जब मैं 10th 11th 12th में था, तब मैं बच्चों को प्राइवेट ट्यूशंस देता था. So and yeah, I'm going to tell you about my journey in the industry. मेरी जर्नी कैसी रही है. So पहला क्वेश्चन है, why does the software industry exist, right? हमारी software industry है ही क्यों? What is this kind of work? So you can think like कि I can give you an example जहाँ पे I can tell about like this. Software industry is all about keeping records. Okay, so let's say आपके स्कूल में लाइब्रेरीज होती है, राइट? लाइब्रेरी में क्या होता है, आपके पास बुक्स होते हैं, आप बुक्स के लिए लाइब्रेरी, अब बुक्स क्या है, आप बुक्स लेते हो और रिटर्न करते हो, इसका कहीं रिकॉर्ड रखना पड़ता है. यू हैव टू कीप दोज रिकॉर्ड्स, एंड दैट is being kept in a kind of register, or you also are handed a library card, right, where you track the records of like कौन सी book कब ली आपने, कब return करी. So these all record keeping is very cumbersome. It's very hard to keep these records in a a kind of register, because registers are can be misplaced, वो इधर उधर हो जाते हैं, and then अगर मान लो पानी लग गया उस, there's something like that. So yeah, that happens. So this software industry is all about keeping those. So let's say banking, for banking the software industry exists because now if you want to keep the records of how much money is coming in your account and going out, the software industry can help you. So I would say there are much more things which the software industry can do, but प्राइमरी अगर आप देखो तो जहां तक ज्यादातर इसका मोस्ट ऑफ द यूज जो हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, इज टू अबाउट द रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, moving ahead, why did I choose to join this career? Like when I was so I can just tell you that मैं my sisters, मेरी जो बहनें थी, जो elder sisters थी, they were doing BCA and MCA, which is like computer application courses थे. So I also looked upon to them, and then मतलब मेरे को लगा कि यार ये भी एक career है, and I also got some kind of mentorship from my sisters. So I thought that why not join this career, and I wanted to earn money as quick as possible. And I heard about like मेरे uncle और मतलब मेरे जान पहचान में I had some relatives where I knew that they were they had done some computer application courses and then they were earning money. So I joined this career just because I had those people to interact with कि हाँ इसमें कैसे होता है, and there were people to guide me to join this career. So I chose this career. The other, what education do you think we need to work on this career? So I think that the education that you need is about the aptitude and the mathematics. 10th level की mathematics, बहुत ज़्यादा high level की नहीं बोलूँगा, but 10th level की mathematics, which is around percentage and percentage, speed, distance and time. ये सब जो normal आपके 10th level की mathematics होती है. aptitude जो होती है, aptitude is your logical reasonings exercises.
that is also very much needed. After that, yeah, 12th के बाद क्या कुछ ऐसे courses हैं which are very much specific for these career? Yeah, there are. So one is your BTech. BTech आप अलग अलग ब्रांच से कर सकते हो, like मैकेनिकल सिविल, बट फॉर दिस आई वुड रिकमेंड कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से करो या फिर आप आईटी से करो. मैंने बीटेक नहीं करी है, बट मैंने दूसरा किया है कुछ, एंड दैट द अदर थिंग इज the BCA, so Bachelor in Computer Application, and Bachelor in Computer Application is very much primary, ये कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है. एंड आई हैव डन द BCA. मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से करी थी, बिकॉज मैं इंटर्नशिप में चला गया था आफ्टर जस्ट 10th. So I did not go through the BCA route normally after 12th, but yeah, once I was in the company, my company was actually taking care of my BCA education through distance education. And distance education क्या होता है? You don't need to go to college every day and just आपको एग्जाम्स के लिए जाना पड़ता है. So yeah, this is what I feel. But अगर अभी आप क्लास 10th में हो, you need not worry about यार बीटेक करना है आगे जाके या BCA करना है. अभी इस पे ध्यान दो कि आप 10th लेवल की मैथमेटिक्स अच्छी कर रहे हो, एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग्स अगर हैं, क्वेश्चंस आपको मिल जा रही हैं, RS अग्रवाल की बुक्स मिलती हैं, आप वो पढ़ सकते हो. दैट इज गुड इनफ. ओके, एंड हाउ इज माय जर्नी ऑफ दिस एजुकेशन? इफ यू टॉक अबाउट मेरी कैसे एजुकेशन हुई है, सो आफ्टर 10th आई डिड नॉट डू 11th एंड 12th. I moved into the diploma. So just like BTech होता है, आपसे BTech से एक लेवल नीचे डिप्लोमा भी होती है. तो आप क्या कहते हो, 10th के बाद डायरेक्टली आप डिप्लोमा में जा सकते हो. तो मैंने 10th के बाद डायरेक्टली मैंने डिप्लोमा आईटी से करा, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही पता था. आई वाज नोइंग दैट आई वांट टू गो इन दिस आईटी सेक्टर, सो आई डिड नॉट वांटेड टू spend time in 11th and 12th. So I just switched from there itself. आपको भी अगर 10th के बाद if you feel like you want to go in a specific engineering branch, let's say आपको पहले ही पता चलता है you want to go into mechanical engineering, civil engineering, you can always go for diploma courses. Diploma courses will allow you to go just after the 10th, and they are much cheaper, I would say. If you compared with the BTech fees, डिप्लोमा की फीस बहुत कम होती है. And then after the diploma with IT, I went for the BCA, which was, as I told, it was sponsored by my company. It was distance education, and I was doing an internship and as I was doing the BCA, which was sponsored by company, I was also in the 2 years internship in ThoughtWorks. They call it as a STEP program, where they give you a good, I would say, a holistic software development industry का पूरा idea देते हैं. They give you give you everything in the 2 year internship, and teach you everything, and industry experts are also involved उसमें. So yeah, that is how my journey is around. Any questions as for now yet? Okay, Tushar, if you can moderate. Yeah, किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो. आई थिंक गाजी ने हैंड रेज किया अभी. Yes. गाजी, गो अहेड प्लीज. Sir, no doubt. ओके सर, किसी को भी अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो या फिर चैट में लिखो. ओके सर, नो डाउट सर. Okay, so moving ahead, how does my day in my software job looks like? What work do I do? Whom I work with? My favorite part of my work. So what work do I do? It's very hard to say, but okay, I will try to maybe simplify करता हूँ. मेरा काम software field में is about system administrator. Now system administrator, who is system administrator? Who makes sure system is working fine. Anyone raised their hand or something? Just a second. No, someone has joined. Shivram has joined. Okay.
Yeah, so what work do I do is about the system administrator, जहाँ पे मेरे को I would say I have to make sure the systems are running fine. I do not write softwares. I do not write web applications. Those things are done by someone else in the team. But to make sure the system is up and working, कि जिस पे the system should be up and working, and so that the folks who are writing the software or some web application code, they are sorted that system तो गड़बड़ नहीं होगा, machine में तो कोई problem नहीं है, and they can just put their code and it will run on it. And whom do I work with? I would say, yeah, as I said, right, I am a system admin, but then I have to make sure the developers in my team who are writing the web application code, they are not facing any difficulty. So that is my I have to work with them closely. And what is my favorite part of my work is about because my as I said, my work is like system admin. There are times when at 10 p.m. in the night, or maybe 11 p.m. in the night, or 1 a.m. in the night, in the midnight, I do receive some alerts where it says कि यार system का ना memory बहुत ज़्यादा high हो गया. If you people have smartphones, आपने देखा होगा कैसे मोबाइल फोन्स में रैम होता है, राइट, मेमोरी, और मेमोरी फ्री करना होता है, नहीं तो मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो योर मोबाइल विल हैंग, राइट. तो वैसे ही समझ लो कि इफ द सिस्टम्स वेयर द एप्लीकेशन कोड इज रनिंग, if those go, उनकी मेमोरी भी अगर, if I do not clean the memory of those machines, it can create issues. And this is my favorite part of the work because it gives me a just like firefighting mode में आने का मौका मिलता है. I feel like once I get into the firefighting mode and then I solve it, I feel like yeah I did something good, just like a firefighter कि आग कहीं लगी है और हमने मिलके, and it's not like I just go and do it on my own. I take the help from other people. Like I ask them like what's happened, what is wrong, is it, it's not always that कि मुझे ही सब कुछ solve करना है, but I do collaborate and coordinate with people. So yeah, it feels like a team effort when there is some issues. So yeah. Qazi said storage full अगर हुआ तो you can help. ऐसा कुछ. Yes, storage full हो गया, memory ज़्यादा जा रही है, CPU spike, like CPU processing spike हो रही है. So these kind of things, yeah, I have to. Qazi raised his hand, sir. Qazi कुछ बोलना है आपको? Yes sir, अगर कभी आप बाई चांस मगर कभी आप जो स्टोरेज अलर्ट का जो मैसेज है होगा आपसे मिस हो गया तो उसके बाद क्या होगा फिर? Yeah, so हमारे में ना एक एक हमने सॉफ्ट अलर्टिंग का एक वो बना के रखा है. तो अलर्ट ऐसा नहीं आता है कि सिर्फ एसएमएस आया बात खत्म हो गई. अलर्ट ऐसा आता है कि फोन आता है. इफ आई डू नॉट एक्नॉलेज दैट अलर्ट, राइट, it will keep on coming और मेरा फोन वो रात भर बजता ही रहेगा. If I do not pick it up, it's not like सिर्फ मैं whole and sole हूँ. Yeah, I am working as if there are other people also in the team. So अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो it will actually escalate that alert and give it to someone else as well. So yeah, it's very, I would say कि it's very hard to miss the alert. अगर let's say but let's say कि हाँ मेरा phone switch off है something, right, it will keep in मतलब it will do repeated efforts. Let's say 5-6 बार वो करेगा call, and if I do not still pick up, it will know in that system, in the alerting system, it knows who is the next person to contact to. So yeah, hope it answers your question. Yes sir, thank you. Yeah sir, salary से related बहुत questions आ रहे हैं. अथर्व ने पूछा, सुषमा ने पूछा. Okay, so okay, salary related, let me just go ahead in the next slide and see. Yes sir, yes. Okay, what were my expectations about this career when I was student? I think salary का भी मैं इसी में cover करूँगा. Okay, so what were my expectations about this career when I was a student? मुझे जब when I after 10th when I thought to join the diploma, people were saying यार diploma मत करो because इसमें 20-30 हजार की सैलरी होती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता. ओके, स्टार्टिंग लेट्स से स्टार्टिंग 10-12,000 होगी, एंड आफ्टर दैट मे बी चलो 20-30 हजार हो जाएगा पर मंथ.
you can't get more than that. And मेरा ये था कि यार I just want to get independent as soon as possible. Even in my college days when I was teaching students as basically I was giving them private tuitions, I was getting money. I was getting I think 1000 2000 कुछ मिलता था, but that was just enough to यार मेरा pocket खर्चा चल जाए, right? But it was not, I could not start a family, right? कि यार मैं मेरी वाइफ आएगी, मेरे बच्चे आएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था उतने पैसे में. जस्ट लाइक ठीक है यार, चलो कुछ तो अपने पेरेंट्स पे बर्डन कम कर दिया. And once I started diploma, many people were saying यार 20,000 30,000 से ऊपर नहीं जाएगा. And I was like यार देखो, फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये है कि मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है मेरे को. तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो यही था कि यार मेरे को जो मिल जाएगा मैं वो करूंगा, बात खत्म. तो when I started in the internship which I told 2 years का internship था, तो I was getting I think the first year I was getting 10,000 per month, and after that 12,000 per month every. एंड उसके बाद जब वो कंपनी ने मेरे को क्या कहते हैं, द कंपनी एक्चुअली हायर्ड मी एज अ फुल टाइम, इंटर्नशिप क्रॉस करके फुल टाइम हायर किया. तो दे वर गिविंग मी अ पैकेज ऑफ आई थिंक 6 लाख पर एनम. एंड 6 लाख पर एनम आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बट व्हेन यू कम इनटू रियलिटी 6 लाख में से बहुत सारे आपके टैक्सेस कटेंगे और बहुत सारी चीजें कटती है. बट आप ये समझ लो मेरे अकाउंट में आई थिंक 40,000 के आसपास आ जाता था, 40,000 45,000, व्हिच इज गुड इनफ. ओके, now this whatever I'm talking about, this is 2017 में 6 lakhs था. And I would say if you never stop learning, okay, ये आपका कोई भी वो I am like, it's not just software industry से नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी चीज के लिए भी बोल रहा हूँ. whatever you do, if you do not stop learning, if you give your 100%, आप अगर ऐसे सोचोगे यार मेरे को तो 12,000, आई एम जस्ट गेटिंग 12,000, व्हाई शुड आई वर्क 100%, व्हाई शुड आई गिव माय 100%, मेरे को तो उतना पैसा मिल भी नहीं रहा है. द थिंग इज यू आर लूजिंग योर कैपेबिलिटी, आप अपनी कैपेबिलिटी कम कर रहे हो. ओके, सो आफ्टर दैट आई एक्चुअली वर्क 3 years इन दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसने मेरे को इंटर्नशिप भी कराई थी. And I moved into another company which was like again, so थोड़ा salary hike हुआ when I switched. And then I thought about यार नहीं, मेरे को ना थोड़ा freedom चाहिए. I want to work on my own terms. Okay, अभी जैसे मैं I'm not working, earlier I was working in Pune, but now I am in at my hometown, I would say. And the work timings are also very flexible, and the pay is also very good. The pay is, I think it's around 3 lakh per month. So it's like more than enough for me. But the thing is कि I would say never stop learning. क्योंकि बात है ना कि when I was getting 40,000 per month, I could have stopped there itself, saying कि यार बस ठीक है, इतना मिल रहा है, काफी है. Why should I put more effort? Why should I go more? Why should I explore more? But if you do not stop, right? If you अगर मैं ये बोल रहा हूँ आज मेरे को 3 lakhs मिल रहा है, right, per month, okay. बट अगर मान लो मैं आज ही बोल देता हूँ बस अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, द थिंग इज ओके ठीक है मुझे नहीं चाहिए होगा, ओके, द प्रॉब्लम इज मुझे मिल सो या गाजी प्लीज म्यूट कर दो. कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो. यस, थैंक यू. यस सर, प्लीज कंटिन्यू प्लीज. या सो या it could be that कि I don't want it, but I should never decrease my capability. Maybe I am doing some, maybe मैं कोई NGO related work कर सकता हूँ, maybe some मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट्स उठा सकता हूँ. बट द मोमेंट आई से कि यार नहीं यार दिस इज एनफ, आई सेटल, है ना. द थिंग इज आई एम आल्सो, मैं तो अपना ग्रोथ तो हैम्पर कर ही रहा हूँ, मैं तो अपना ग्रोथ, आई एम स्टॉपिंग माय ग्रोथ. सेकंड थिंग इज आई एम इवन स्टॉपिंग माय अदर पीपल, लाइक whoever the people who are surrounding me, I'm also kind of not giving my 100%, and I'm not able to help them 100%, right? Let's say अगर if I'm helping someone also, अगर if I am not so much capable, how can I help more, right, to that person? मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत help कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा help नहीं कर पाऊँगा. So yeah, and yeah, that is what I have in terms of salary. I hope it has answered the question. Yes sir, it has amazed all of us. Yeah, but 3 lakhs per month. Yeah, but the gist is that's where I said कि 10,000 12,000 per month से start किया मैंने. तो do not see the आज का figure, see the journey, and that is where
I wanted to tell it. And yeah, if opportunity, why I would say if opportunity knocks, you have this saying, right? Opportunity seldom knock twice, right? तो get an opportunity, just grab it. ऐसा नहीं कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, I don't know, ऐसे नहीं करना चाहिए. Do not self doubt तो कभी नहीं करने का. I understand कि conditions हो सकती हैं, family conditions हो सकती हैं, आपको हो सकता है आपको different city जाना पड़ रहा है, and you are not able to go, that's fine. मतलब ठीक है, conditions है, and think of an alternative way. But अगर आप ये self doubt अगर आप ला दिए ना कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा लेकिन अगर फेल हो गया तो, have a backup plan, there is no issue with that. But ऐसा अगर आप self doubt करके आप risk ही नहीं लोगे ना, तो फिर potential जो होता है ना, risk नहीं लिया तो reward भी नहीं मिलेगा. Yeah, somebody has raised a question. Yes sir, Atharva has a question. Atharva, please. Sir, Sir, this software engineer job is permanent? Is my job permanent? Yes. No, it is not. That is where it is a risky, and the more risk you take, the more reward you get. And मैं बताता हूँ, risk mitigation is very underrated still. आप बैंक में जाके पैसा डालते हो, बैंक क्या करती है, आपका बैंक पैसा लेके उधार दे देती है बड़े बड़े बिजनेसमैन को, एंड बिजनेसमैन क्या करते हैं, रिस्क लेके बिजनेस करते हैं उससे, राइट? तो सेम इज फॉर मी. लेट्स से अगर मैं अगर परमानेंट जॉब के चक्कर में जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल गो टू सम लेट्स से TCS, इन्फोसिस, ऐसी कंपनी के पास जाऊंगा, एंड व्हाट वुड हैपन, दे विल because they are giving me some kind of security, right, surety, and they would not do it just मतलब हवा में वो नहीं दे पा रहे, they also have to hire so many people, right, they have to allocate so many things, उनके भी बहुत सारी जगह खर्चे हो रहे हैं, उनके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें. So that is where if a client is giving them X money, they will be giving me only 10% of it. Why? Because they have 90% of expenses to take care of, right? आपके ऑफिस का खर्चा, ये वो दुनिया भर की चीजें यार, बहुत सारी चीजें हैं. इफ यू टॉक अबाउट मी राइट नाउ, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसिंग, तो मुझे देखो लैपटॉप खुद का खरीदना पड़ रहा है, इंटरनेट का खर्चा खुद का लग रहा है, राइट? इफ आई वुड हैव गॉन इन अ परमानेंट जॉब, वहां पे हो सकता है ये सब वो लोग टेक केयर करते, बट देन it is the risk which I am taking, and I would say कि पैसे हमेशा बचा के रखने चाहिए. If you know, हम लोग मिट्टी, पता नहीं आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं, मिट्टी के बर्तन होते थे, मतलब मिट्टी के वो पिगी बैंक होता था, ओके, बचपन में, तो उसमें पैसा हम जमा रखते थे, राइट? तो बट ज्यादातर आप लोग जानते हो ना, बचपन में आप क्या करते हो, चल थोड़ा बहुत डालते हो फिर तोड़ के खत्म कर देते हो. तो मैं ये कहूंगा कि वो ना करो तो बेटर है. डू हैव सम गोल्स फॉर योर पिगी बैंक. पिगी बैंक को तभी तोड़ो जब आपका गोल रीच हो रहा है, अदरवाइज देयर कैन बी सम इशू. तो मेरा जॉब अगर परमानेंट नहीं है, लेट्स से देयर इज अ रिस्क, ये हो सकता है मेरे को यू नो मे बी 2 हफ्ते पहले बोल दे कि लेट्स से बोल दे कि यार अब काम खत्म हो गया, राइट? तो मुझे 2 हफ्ते बाद छोड़ना पड़ेगा, एंड दैट वुड मीन कि मेरे पास थोड़ा फंड, मुझे मालूम है कि आई विल गेट सम जॉब समवेयर, राइट? 2 हफ्ते के बाद मुझे मिल जाएगा जॉब, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एकदम हड़बड़ी में कुछ भी ले लिया. सो आई शुड हैव सम मनी विच कैन टेक केयर ऑफ माई सम एक्सपेंस, राइट? अगर मान लो मेरे महीने का खर्चा है 10,000 रुपए, राइट? तो मेरे पास एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड, इट इज गोइंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी. तुषार, I have heard that TAP has actually launched a vertical of financial literacy as well. So I'm going right, sir, right. Because the thing is, if you earn so much, the thing is कि if you start earning so much money, you also have to know how to manage the money, and that is where financial literacy comes in. कि आपको 6 months का expense तो हमेशा बचा के रखना ही है, okay? अभी आप बच्चे हो, fine, आपके parents देख रहे हैं, but once you start earning, कुछ भी कमा रहे हो, अरे 10,000 भी कमा रहे हो, 5,000 भी कमा रहे हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार मेरे पर मंथ का एक्सपेंस कितना है, अगर क्या वो मेरी इनकम से आ जा रही है एक्सपेंस, तो हाउ टू मेक श्योर कि मैं 6 मंथ का एक्सपेंस अपना रख लूं, सो दैट इफ आई वांट टू डू सम काइंड ऑफ इफ आई वांट टू स्विच जॉब, इफ आई वांट टू डू सम कोर्सेज, ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे ही ना रहे और फिर किसी और से मांगना पड़े. And once you start earning, nobody will give you money because they will say यार तुम तो कमा ही रहे हो, right? Like parents भी आपका कब तक ख्याल रखेंगे, right? So yeah, okay, more people asking questions. Yes sir, first Ruchika, then Arman. Ruchika, please.
Yeah, hello. Hi. मेरा अभी 10th हो गया है, so I have question like I have so much of confusion कि मैं कौन से field में जाऊँ to become a software engineer and what should I choose? So I would say very easiest option would be to go with the diploma courses. I think you are in Mumbai or Pune. I am in Pune. Okay, so पुणे में गवर्नमेंट कॉलेज तो होगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे शिवाजी नगर में है आई गेस. आई एम नॉट वेरी 100% श्योर, बट एक बार आप पता करना. तो उसके क्या होते हैं ना, एडमिशन आते हैं. इफ लेट से हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं तो उत्तर प्रदेश से किया हूँ. ओके, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र, बट द थिंग इज कि यू कैन आस्क पीपल and maybe I think Tushar bhaiya can get in touch with me because I know very most of my colleagues who were in my internship. They were doing the diploma in IT or CS, and उसके थ्रू आपको क्या होगा ना, आपको एंट्री लेवल जॉब तो बड़े आराम से मिल जाएगा. ओके, एंड इफ यू से कि नहीं यार मेरे को एंट्री लेवल जॉब नहीं चाहिए, मुझे हो सकता है पेरेंट्स ना अलाउ करें. ओके, पेरेंट्स वुड कैन से कि यार नहीं 12th तक तो करो ही करो, राइट? तो या डू द 12th and then go into BCA or BTech. And BTech, I would say BCA is cheaper than BTech. So if your only objective is to get into the job, go with the the BCA degree than the BTech. So because you are in 10th, the first thing that you should think about is how to get into diploma courses of in IT branch and CS branch, and that too with the government college, so that पैसे बहुत कम लगते हैं, स्कॉलरशिप भी आ जाती है तो बहुत कम में हो जाता है. सेकेंड इज दैट वंस 12th इज डन यू कैन डू अ BCA, दैट इज द चीपर. एंड द थर्ड वन इज इफ यू वांट टू गो, मतलब BCA से ज्यादा बेटर डिग्री होती है BTech, you want to go a full-fledged BTech engineering करना है, then you can think about that also. But I am giving you options as per the cheapest and most possible, like feasible option first. So yeah, hope it answered your question. Yeah, got it. Arman, please go ahead. भैया आपको कितना समय मिलेगा कि 10,000 पर मंथ की सैलरी से 6 लाख मतलब 3 लाख सैलरी तक? अच्छा, 10,000 पर मंथ मुझे 2015 में मिलता था, एंड 3 लाख अभी मिलता है. सो 2022, ये 7 years हो गए मान लो, है ना? आई गेस 6 या 7 years हो गए. हाँ, एक मिनट, डायरेक्टली जंप नहीं किया है, ये मैंने बताया ना. ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन 10,000 अगले घंटे से वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ. बीच में 6 लाख हुआ, फिर 9 लाख हुआ, फिर 16 तक पहुंचे, फिर 25 तक पहुंचे. तो वो जर्नी हमेशा चलती रहे. यू शुड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल. एंड स्काई इज द लिमिट, आई वुड से. ऐसा नहीं है कि मैं जितना कमा रहा हूँ उतना कोई नहीं, मुझसे बहुत मैं जितना मुझसे ज्यादा लोग कमा रहे होंगे. तो इफ आई स्टॉप राइट नाउ, मे बी ठीक है, फिर वही है, फिर वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने बोल दिया कि नहीं अब इससे ज्यादा नहीं करना है, राइट? सर, कुड यू प्लीज रिपीट आपका रोल क्या होता है, मतलब जो आपने वर्ड यूज किया, आपकी पोजीशन को क्या बोलते हैं? ओके, अगर मैं एकदम जाऊं डिटेल में तो इट्स अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. Site reliability engineer does what? It makes sure the site is running uptime every time. Okay, it's running 24/7. That is where the alerting came in. Okay, but to simplify this for the kids is system admin, because मैं ज़्यादा कोड नहीं करता, even though I know how to code, but ज़्यादातर मेरी responsibility is not about coding. It's about making sure those alerting systems, those infra related stuff are sorted. So yeah, if you talk about what is my job title right now, it's site reliability engineer. But इसको सिंप्लीफाई करके अगर बताना हो तो कैसे, जैसे बैंक्स में पहले नहीं होते थे सर्वर रूम होता था, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, तो उसी तरह से समझ लो कि आज के टाइम में सर्वर्स है नहीं फिजिकली, वो क्लाउड में है, यानी कि अमेजन के वेयर हाउसेज, गूगल क्लाउड के वेयर हाउसेज में, बट स्टिल उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए. तो दैट इज मी. Falaknas has a question. Please, Falaknas. Yes, Bhaiya, I want to ask that. Now everyone here are from 6 to 10. So from now, how we can start by our little steps to engineering? As I said, डिप्लोमा करिए आप, और नहीं तो ऑनलाइन. आजकल तो यूट्यूब से बड़ा टीचर कोई है नहीं. मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर मेरे टाइम डिप्लोमा के टाइम यूट्यूब होता उस समय इतना
तो पता नहीं, मैं मतलब शायद मैं यूट्यूब ही ज्यादा कर रहा होता, बट आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा गाइडेंस तो चाहिए होगा, ओके। एंड दैट इज वेयर कि डिप्लोमा कोर्स करना बहुत अच्छा रहेगा। आई एम नॉट श्योर कि आपके कॉलेज में अभी तक, मैं जब टैप में पढ़ाता था, तो आई यूज्ड टू टीच स्क्रैच इज अ टूल बाय MIT। आई होप कुछ लोगों ने किया होगा काम इस पे। Yes. यस सर। तो इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, आपने वहां से स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात है। बट द थिंग इज स्क्रैच भी आपने खुद से तो किया नहीं होगा, देयर वाज समवन, सम भैया दीदी हेल्पिंग यू आउट, तो वो तो थोड़ा बहुत तो गाइडेंस लगेगा ही। एंड दैट इज वेयर डिप्लोमा कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो आप एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो मिलेगा आपको कि यूट्यूब पे भी सर्च करना है तो क्या करना है, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है। तो आई थिंक दैट इज देयर। एंड अगर आप स्क्रैच कर चुके हैं तो आजकल तो स्कूल्स में 10th के पहले ही पाइथन वाइथन भी पढ़ा रहे हैं, राइट? So if you can start learning Python, that would be very good. रुचिका, अभी सर को आगे भी बढ़ने दो थोड़ा उनके प्रेजेंटेशन के लिए, राइट? प्लीज सर। Okay, so I think I have covered this. What were my expectation? My expectation was just to get some livelihood. मेरे को कुछ पैसा आना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था, that's all. Moving ahead, what skills do you think are required? Yeah, so I think the skills that are required here is around, you know, आपकी debugging skills अच्छी होनी चाहिए। What do I mean by debugging skills? It's not like कि आपको कुछ बता दिया है, बस आप उसको set of procedures बता दिया, आप बस उसी को follow करो, नहीं। If things are not working fine, you have to tweak it. You have to get the feedback. Just like रोटी बनाने की आज तक कोई बुक नहीं है कि रोटी गोल कैसे बेलें, आज तक उसकी कोई बुक्स नहीं है। रोटी कैसे गोल बेलना है वो आपको रोटी बेल के ही पता चलता है। एंड डेफिनेटली देयर आर पेरेंट्स होती है, मम्मी होती है हमारी, जो बताती है नहीं तुमने क्या थोड़ा गड़बड़ किया है। बट द थिंग इज कि देयर इज नॉट अ सेट ऑफ प्रोसीजर कि यार ऐसे करोगे तो ही रोटी गोल बेलेगी, आपको प्रैक्टिस करके ही होगा। सो दैट इज व्हाट डीबगिंग मींस कि अगर कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, इट्स नॉट लाइक कि एक लिखा है कि यही होगा तो यही करना है। It's like you have to figure out things, you have to investigate, okay? So even for my thing, if I see कि यार सिस्टम की मेमोरी बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ है कि सिस्टम की मेमोरी बढ़ गई है तो यही चीजें होंगी, इसी से बढ़ी है। I have to see कि उसमें क्या क्या चल रहा है, राइट? उसमें कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो जिसकी जरूरत नहीं है बट वो फालतू में चल रहे हैं। और थोड़ा उसके लॉग्स, मतलब हर कोई चीज, मतलब आई वुड से कि जब भी आप सॉफ्टवेयर लिखते हो ना, एक प्रॉपर लॉगिंग करते हो, मतलब वो हर एक मतलब प्रिंट करता है कि उसने एक लाइब्रेरी में से एक बुक निकली, एक लाइब्रेरी में से बुक आई, राइट? कितने यूजर्स आए थे इस एप्लीकेशन में, तो वो सारे लॉग्स चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो दोज डीबगिंग स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड आई वुड से अबाउट दिस आर लाइक टेक्निकल स्किल्स में अगर मैं कहूँ कि यार टेक्निकल स्किल्स में क्या चाहिए, तो आपको सम कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए आपके पास, थोड़ा बहुत आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, ओके? बट आई थिंक दैट इज, तो मतलब टेक्निकल स्किल्स तो आप कवर कर लोगे, व्हिच इज फाइन। व्हाट अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स? ओके, सॉफ्ट स्किल्स जो आपको इस इंडस्ट्री में चाहिए इज लाइक you have to be very empathetic, you should have some empathy. Why empathy is very much required is जब मुझे को कोई आके बोलता है, right, somebody comes to me and says memory is shooting up, okay, a memory is shooting up, I have to understand कि how much that person know, वो क्या सोचता है, उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या देखा होगा, because that will help me to investigate। एक लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो वहीं से हो जाता है, उसके अपने आप को उसकी जगह रख के। इफ दिस इज अ टेक गाय, लेट्स से अगर वो बहुत ही टेक्निकल है, अगर वो कहता है कि मेमोरी में कुछ इश्यू है, इट्स लाइक कि हाँ मेमोरी में कुछ इश्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसने लॉग्स वॉग्स पढ़ लिए होंगे, बहुत सारा बेसिक इंस्पेक्शन कर लिया होगा, उसके बाद आया मेरे पास। बट if I know that there is some person who is not so much technically expert, हो सकता है कि वो business related है person, so I know कि okay, maybe I have to still look at the logs because I'm not 100% sure कि उस आदमी ने अभी तक logs देखा है कि नहीं देखा है, तो that empathy should be there, otherwise it will take a lot of time, बहुत ही ज्यादा to and fro चलता रहेगा if you do not put
yourself in that person's shoes. So मतलब आपको सोचना पड़ेगा उसकी, वो अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ओके, व्हेन यू आर सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार उनका मेंटल स्टेट कैसा होगा, उनकी क्या मतलब उनका बैकग्राउंड कैसा है. So this empathy very much, at least for my job role, is very much required. And second thing I would say कि communication, okay, communication should be very good. I would say communication in the sense so basically whatever I'm doing, अगर मुझे लगता है उसमें 4 लोग को impact पड़ेगा, okay, right, if I'm, let's say कि मैं जैसे किचन में जाओ और किचन में आपने खाना बनाया, ओके, और आपने चीनी कहीं रखी जाती तो वहां से हटा के कहीं और रख दिया, ओके, नाउ आई नो कि यार मैंने चीनी का डब्बा उठा के कहीं रख दिया दूसरी जगह. द सेकंड पर्सन हु विल कम इन, ही विल, मतलब क्या होता है, वो देखता ही ढूंढता ही रह जाएगा चीनी का डब्बा कहाँ है कहाँ. तो आई मस्ट गो एंड टेल द टीम बैक, ओके, कि यार चीनी का डब्बा इधर से उधर हो गया है. ओके, सो नोइंग अबाउट व्हाट टू से, व्हेन टू से एंड whom टू से. ऐसा नहीं कि सबको अब मैं बताऊंगा कि यार ये चीज मैंने इधर मिसप्लेस कर दी है, बट अंडरस्टैंडिंग हु आर द कंसर्न पीपल, मेकिंग श्योर कि they are fully aware. Otherwise what would happen, वो जब जाएंगे किचन में तो मेरे को याद करेंगे, वो मेरे को हो सकता है कुछ मन में गाली भी देंगे कि यार ये बताओ ये गया कुछ करके आया, हमें बताया भी नहीं और इसका इधर का उधर कर दिया. बिकॉज एट टाइम्स यू हैव टू डू समथिंग विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस. हो सकता है आपको उस टाइम पे वैसा करना पड़ा हो बिकॉज ऑफ सम, लेट्स से मेमोरी बहुत ज्यादा स्पाइक आ रही थी, राइट, एज एन एग्जांपल कि मेमोरी बहुत स्पाइक आ रही थी, मुझे कोई बहुत क्रिटिकल सर्विस नहीं थी, बहुत क्रिटिकल सॉफ्टवेयर नहीं था, पर उससे मुझे बंद करना पड़ा सो दैट मोर क्रिटिकल सॉफ्टवेयर चलते रहे. बट देन बिकॉज आई हैव स्टॉप सम सॉफ्टवेयर, राइट, आई शुड गो एंड टेल टू द कंसर्न पर्सन, वरना अदरवाइज क्या होगा, कल जब उनको पता चलेगा यार ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा, एंड देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार क्यों बंद हो गया, क्या हो गया, एंड देन आई विल टेल देम कि यार मैंने बंद कर दिया था because of this and this issue. So they will say yaar at least you should have told us, right, otherwise like they would be in a panic state. So yeah, that is what I think are the required skills. So communication, being empathetic are the soft skills which you I think required. If I talk about technical skills, you need debugging, and technical skills में coding में बहुत सारी चीजें आती हैं, Python and then Scratch and sorry no sir, वो गलती से उसने ये कर दिया. Okay. So I hope this has answered most of the questions. Anyone who Yes, was still in a doubt, please raise one. हाँ sir, there are few questions. जैसे मुस्कान ने पूछा कि sir, can you talk about a project you successfully executed? Could you share something about that, your experience? Okay. I would say in my internship, okay, in my internship phase, we had there were like I think 12 to 13 interns were handed some task, and in that the task was to actually develop a library management system. So we had some books in rack, and it used to happen like people used to take some book, and then now they have taken that book, the other person needs it, but that person doesn't know कि यार ये book कहाँ है, किधर है, किसने ली है. There was no tracking, right? So we had to create a library management system, and yeah, we did it. इसमें मेरे को इसी में मुझे soft skills की I understood like what are the soft skills are required, even though you can be a what do you say, kick-ass developer, kick-ass smart guy, but you can't do all the things alone. एक कंपनी जब like I would say एक कंपनी में आपके बहुत सारे स्मार्ट लोग होते होंगे, right? But the thing is कि if you do not work in a team, okay, you can achieve something, at least कुछ तो आप अचीव कर ही लोगे, like अपने दम पे तो आप कुछ तो अचीव कर ही लोगे, but if you want to achieve big, you have to use everyone's skill set. आपकी कुछ skills हैं तो कुछ weakness होंगी, दूसरे की कुछ strengths हैं, कुछ weakness होगी, तो आपको क्या करना है, ऐसी टीम बनानी है जिसमें आप सबके strengths को ऑप्टिमाइज कर सको और जो वीकनेस है उसको एक दूसरे के स्किल से कवर कर सको. सो या दैट वाज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे क्या था ना, आई वुड से इट्स वेरी हार्ड टू गेट सम, आई वुड से इन द इंडस्ट्री इट्स वेरी हार्ड टू गेट सम प्रोजेक्ट फ्रॉम द डे 1 टू द डे लास्ट. हो सकता है आप, सो यू ऑलवेज कम समवेयर इन द बिटवीन. अगर आपको डे 1 से कोई प्रोजेक्ट मिल गया लेट्स से, तो मे बी आफ्टर
a month or 2 months or maybe after a year, you would be rolled off from that project, because now those skills that you came up with for the day one are not required now, and maybe some other people would carry forward, right? तो क्योंकि because you know, right, एक कंपनी में लोग हमेशा तो जिंदगी भर रहते नहीं है, right? If you, अगर आप लोग देखोगे, let's say HCL, Infosys, चलो 4 साल काम कर लिया, 5 साल काम कर लिया, but then in the IT industry it is a norm कि जहाँ पे 2 साल में लोग switch कर ही देते हैं. अगर 2 साल में वो switch नहीं कर रहे हैं, at least कंपनी तो वो project तो switch कर ही दे रहे हैं. तो yeah, so in the internship phase only I got an opportunity to work on a project from day one to the day last. Other than that, either I'm coming in the day one or maybe I'm coming in the day, let's say day 365th. So ऐसा होता है, like you do not get something, and even though you can, I can say कि हाँ मैंने कोई project उठाया, मैंने किया और पूरा खत्म कर दिया. But the thing is कि software development never stops. अगर आप कोई भी आप एप्लीकेशन सोच लो, फेसबुक सोच लो, क्या फेसबुक में आज नए फीचर्स नहीं आ रहे? क्या व्हाट्सएप में फीचर्स नए नहीं आ रहे? आते ही रह रहे हैं. तो टू टेल समथिंग कि यार मैंने स्टार्ट किया वो खत्म हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट इज नॉट हाउ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज वर्किंग. कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, खत्म कर, आपको लग रहा है कि आप खत्म कर चुके हो, बट देन फ्यूचर नीड्स वुड कम, मे बी यू आर नॉट इन द प्रोजेक्ट. तो ऐसा है. बट या टू आंसर इन वन लाइनर, कौन सा प्रोजेक्ट किया था? वो स्टेप लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का किया था. एंड या चैलेंजेस वाज टू यू नो गेट मतलब इन अ टीम यू हैव लाइक, नहीं मेरा तरीका सही है तुम्हारा गलत है, एंड द अदर पर्सन नहीं मेरा सही है तुम्हारा गलत है. द थिंग इज अगर ऐसे चलता रहे तो काम ही नहीं हो पाएगा. यू हैव टू एग्री एट सम प्लेसेस. या गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चंस. Arman has raised his hand. Yeah, Arman, please. Bhaiya, what's your most difficult project you ever did? So yeah, my most difficult project was for a medical health domain. ठीक है, वहाँ पे भी I did not have to write the software, but I had to manage access. So basically, let's say कि there is some system, okay, उसके अंदर सब कोई आ रहा है, सब कोई कुछ ना कुछ करके जा रहा है, but then you do not have a track of who went into the system at what time and when did he exit, and who are allowed, who are not allowed. So that was, and इसका कोई solution already exist नहीं कर रहा था in the, if I let's say बहुत सारी चीजों की solutions already exist करते कि okay, if you want to achieve this you have to do this, but इसका कोई solution नहीं था. So I had to basically devise many custom solutions जहाँ पे मुझे खुद का कोड लिखना पड़ गया, I would say. एंड बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ी जो बहुत ही बहुत जल्दी, ऑब्वियसली लोगों को जल्दी करने को नहीं मिलता है, बट आई गॉट इट एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि चलो मुझे कुछ एक लेवल डीपर जाके करने का मौका मिला वहाँ पे. सो या, सो इट वाज अराउंड एक्सेस मैनेजमेंट, आई वुड से. देयर वाज सम सिस्टम, मेनी पीपल आर कमिंग इन डूइंग समथिंग, बट how to, if something goes bad, how to do that auditing, right? किसने क्या किया था, so that we will be able to fix the solution, like fix the system very easily. So yeah, kind of devising an auditing solution on some particular system. Yeah. Sir, Ayesha Siddiqui has a question. Ayesha, please. Yes, Ayesha, please ask your question. आप चैट पे लिख दो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो. ठीक है, मुस्कान बेगम का हम क्वेश्चन ले लेते हैं. मुस्कान, प्लीज. Sir, do you enjoy working with a team or alone? I enjoy working alone, but I enjoy talking to team members. मतलब मेरे को शांति वाला टाइम चाहिए, एकदम फोकस आज चाहिए. Okay, I don't want when I am working कोई आके मुझे पिंग करे, hello Sagar, I want help on this, that. Okay, normally if you are in a company, it happens, and
मुझे ऐसा लगता है कि I want to dedicate some time where I want to help people, I want to get them, you know, working, remove the blocker, but then I should not actually compromise with my focus time. या एक कह सकते हो आप me time भी होता है ना, कि जहाँ पे आप अपना solution कुछ devise कर रहे होते हो. Definitely you would like to take some help from someone, but then it can be कि यार आपने पूरा focus किया, एक solution बनाया, आपने किसी को बोला कि you know this is my solution, what do you think about it? Okay, so वो चीज है कि मुझे alone working करने का अच्छा लगता है, but I would say in reality you can't do anything big alone. Even though I am working, what do you say, I am working as a freelance, ये वो जो भी हो, but the thing is कि the people, the other people are also doing freelancing, but we still have to collaborate. You cannot, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ मुझे तो अकेले काम करने में अच्छा लगता है, मुझे उसका नहीं सुनना, मुझे इसका नहीं सुनना, मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, बट थिंग इज कि आपका आइडिया कितना भी बेस्ट हो, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. एंड अगर आप जबरदस्ती किसी से करवाओगे, वो करेगा, चलो ठीक है वो कर रहा है आपका काम, आप जो कह रहे हो वो कर रहा है, वो बिना मन के करेगा, वो अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी होगा ना वो बताएगा नहीं, तो ये दिक्कत है. सो इवन दो आई कैन से कि आई like working alone, but the thing is the truth is you can't work alone. Yep. Thank you, sir. Falak Naz, please. So that you have worked on. Sorry, please repeat. Bhaiya, is coding something really hard? Have you worked on Scratch? Yes, I have worked on Scratch. वो आपको hard लगता है? Yes, in school days, when in school my teacher used to teach us Scratch, junior Scratch. So you found it very hard to learn? Yes, in the beginning I was a little bit confused, but as I was working on it, it was easier for me. Yeah, so I think the coding is same, and what example I gave around the, you know, roti belne ka, at first you would say कि यार कैसे रोटी बेल, मतलब you know it's very hard. I know it's very hard to make a round chapati, ठीक है नहीं बनती, but then धीरे धीरे practice करने से I would say anything you start new would be hard, right? So हो सकता है आपने scratch किया, it was hard for you in the beginning, now it is fine. Maybe आप Python start करोगे, वो शुरू में आपको hard लगेगा, but then it will become fine. So I would say yeah, coding is hard, but then everything is hard. I would say आपका interest अगर coding में है, then it should not matter कि is it hard or not, because अगर आप कोई भी चीज कह लो, अगर आप डांस को भी ले लो, आप सिंगिंग को भी ले लो, आपको लगेगा बहुत इजी है. आप हो सकता है आप कहोगे कि यार ये बहुत इजी है, मे बी यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट इन दैट, you know, dancing and singing, that it has become easier for you, right? Maybe even if you talk about what do you say, somebody who is very good in art, right? It is not very natural कि यार वो शुरू से ही एकदम पहले ही जब स्टार्ट किए ड्राइंग करना बहुत अच्छा बना रहे. They have spent time, even though ठीक है वो उनको अच्छा लगता है ड्राइंग करना इसलिए वो टाइम दे रहे हैं, fine, whatever be the reason, if you spend time on something and every day you practice, you would get good at it, no matter, मतलब बोलते हैं लोग ना टैलेंट होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट. सो लेट्स से कि जो उसके पास, जिसको आर्ट एंड उसका बहुत प्रैक्टिस करना है, तो ही शुड गेट सम, यू नो, ड्राइंग पेपर, पेंट्स एंड समथिंग. फॉर कोडिंग आई वुड से, कोडिंग के लिए भी आपको आई थिंक यू हैव टू गेट एटलीस्ट अ लैपटॉप. अगर लैपटॉप आपके स्कूल में है अच्छी बात है, नहीं है तो मे बी इट बिकम्स अ वेरी कॉस्टली थिंग. आई थिंक the cheapest laptop would come around 15-20,000 तो पड़ेगा ही, which is a good big बड़ा पैसा है. And the other thing which I see right now, हमारे टाइम में तो नहीं था, but I can see right now even on mobile now you can code, ठीक है? तो I think that is good. If coding is hard for you, just you have to practice a lot. Maybe आपको practice करने का time नहीं मिल रहा है या practice करने की opportunity नहीं मिल पा रही है. So if you have smartphones right now, at least C plus एक language है, C++ and Python, which are you know on which you can code it in your mobile itself.
So I think even though it is hard, you just have to practice. Yep. Aisha, you have a question? Hello, Aisha. Okay, Aisha, please type your question. Sir, please. अच्छा, आगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो. I think I've reached to the end of the slide because this slide I've already answered about technical skills and soft skills. Okay, sir. Yeah. So yeah. So Sushma has asked, what was the failure in your journey and how did you cover that failure? Okay. Yeah. So I would say during my internship phase itself, जो 2 साल का internship किया था, वहाँ पे हमारे mentors ने they did not just only give us technical challenges, they also gave us soft skills challenges, mental challenges, pressure, where they actually asked us to coordinate, like interact with other team members, or when they saw, right, कि यार 2 person में बनती नहीं है, they understood like these 2 smart people are not working together. Okay, so they used to मतलब purposely वो उन 2 को टीम में लेके आते ही थे, because they knew that if you do not learn to basically work together, you can't do big. And हाँ, वो स्टेप लाइब्रेरी में वो चैलेंज था मेरे लिए. I told कि we should not work on this particular language. मैंने सीधे ये बोल दिया कि ये language is not fit for this particular task. Okay, some language, some coding language, and I said that this is the way to go. The other people, I was right. I would say I was right, but I did not understand, like, even though I was right, the thing was that not all the people were familiar with the coding language which I was proposing. So मैं बोल तो देता कि यार ये coding language use करो, ये नहीं use करो, but the thing is the other people would not be working on it and it would be me alone working on the project. तो 12 टीम की, मतलब 12 लोगों की टीम बना के फायदा क्या जब अकेले ही काम करना है, right? So and it will never happen. आप अकेले सब कुछ नहीं कर पाओगे. कितना कर लोगे? छोटे मोटे काम कर लोगे, बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे. And there I failed. I tried telling कि यार ये coding language नहीं, ये programming language use करना चाहिए, and I tried and it failed because nobody was, सबका मन वो हो गया था कि नहीं यार नहीं करना है, इस पे नहीं. And then I had to actually find a middle way. Our mentors allowed us to go like हम 12 लोगों की टीम मेंबर्स में से 2 लोगों को बोला कि you 2 people मतलब kind of do some research on how to use the same language, but जो problems हैं उसको सिर्फ solve करो. Do not try to change the language itself, because if you try to change the language, people will not be able to work. और आप उनको teach करने में ही time चला जाएगा, पूरा 2 महीना teach करने में ही language नया सिखाने में चला जाएगा. So yeah, so that was a failure for me, that where I basically gave preference to technical technical advantage more than the people advantage. So people technical advantage क्या था कि हाँ ये coding language use करेंगे ज़्यादा better हो जाएगा. People advantage क्या था कि ये coding language में ज़्यादातर लोग proficient हैं. तो even though there are some technical challenges in that particular coding language, ज़्यादातर लोग इस coding language को जानते हैं, तो maybe that will work. And थोड़े बहुत जो technical challenges है उसको दूर कर देंगे. Figuring out some alternative, कुछ लेके आएंगे उसी language में कुछ ऐसे solutions लेके आएंगे जिससे issue ना आए. So yeah, that was a failure for me. Okay, thank you sir. रुचिका, स्टार्टिंग में आपको कोई क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ गए थे, आपको पूछना है तो प्लीज पूछिए रुचिका. ओके फ्रेंड्स, मैंने एक गूगल फॉर्म डाला है चैट पे, तो ये आपको भरना है, कंपलसरी है, ये आपका अटेंडेंस होगा. अगर आप ये भरोगे तभी आप सर्टिफिकेट्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे, तो प्लीज भर दो और थम्स अप दे देना. ओके, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ भी पूछना है? हाँ मिथिलेश प्लीज. भैया एक बार और भेजना, मैं ड्रॉप अप हो गया था तो गूगल फॉर्म चला गया. ठीक है भैया म्यूट कर.
Okay. So that's it, I think. Okay. I think Tushar, you can take over. I think the next slides are for, I think, you know. Yes, sir. Yes, sir. Yep. Thanks a lot for your time, sir. Yep. And So I would I really, hope- I would really appreciate Tushar. Like I know that the people, मतलब बच्चे हैं अभी नहीं पूछ रहे, कभी तो पूछेंगे, कभी ना कभी तो आएगा दिमाग में पूछना था. So I would really appreciate if I can get those questions, and maybe I will just text it back on the email. So that is also doable for me, because I know क्योंकि हो सकता है maybe the things I talked about, like diploma and other stuff, maybe अगर बच्चों को होगा, and because I have seen like people are in, like some students are in class 10th, right? So this is a very like, this is the I would say कि at least मेरे लिए तो एकदम turning point यही था, like decisive moment यही था class 10th के बाद ही. तो if you take the right step right now, right here, it will become easier, I would say. So correct. If you have questions, please email to me. I can drop my email in the chat if you want right now. Yes, sir. Please drop your email. Yeah, I'm dropping it. So friends, आपको कोई भी और questions रहे तो आप या तो मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, या सर ने अपना ईमेल आईडी दिया है, देखो आप उनको मेल कर सकते हो. बस अपना नाम, आप टैब से हो, आपका क्वेश्चन, आप कौन से स्कूल से हो, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देना है. एंड ये आज जैसे आज का सेशन हुआ तो आप चाहे तो डेट डाल दोगे कि आज के सेशन में आपने अटेंड किया था. सो उनका वेबसाइट भी सर ने दिया है, आप चाहे तो फोटो ले लीजिए. ठीक है. Thank you, sir. Thanks a lot for your amazing knowledge that you have given us, all of us. And मतलब मुझे भी नहीं पता था कि इतना ग्रोथ है मतलब सीएस के इंडस्ट्री में. मतलब पर्सनली मेरे बहुत सारे फ्रेंड सीएस में है, बट अभी आपने जो कुछ भी बताया मैं उनसे भी शेयर करूंगा. मतलब सो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के. थैंक्स अ लॉट. Okay, sir. I think we are done. Okay then. Bye bye.